Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. This is a class 6 general science presentation by Miss Noreen Bibi. Our today's topic is the chemistry of photosynthesis. Photosynthesis is the food making process of plants. This topic is from chapter number 4, whose title is Plants and Photosynthesis. Learning objectives. By the end of this lesson, students will be able to know about the chemical reactions of photosynthesis, to identify the raw materials and products of photosynthesis, name the conditions or factors for photosynthesis, and to write an equation for photosynthesis. Contents. This topic includes photosynthesis and its word history, location and conditions for the photosynthesis, raw materials and products of the photosynthesis, an equation, and finally an assignment will be given to you. Recapitulation. Recap are the revision of the previous knowledge. In the previous discussion, we have discussed about photosynthesis and adaptations of leaves. Leaves are specially adapted for photosynthesis, and we have discussed in the previous discussion about that adaptation. Adaptations of leaves. Leaves specially adapted होते हैं, उनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस होती हैं, चेंजेस होती हैं, जिनकी वजह से लीव्स अपनी जॉब बेस्ट वे में परफॉर्म करते हैं, और यही हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था. जो लीव्स की एडेप्टेशंस हैं फॉर डूइंग देयर जॉब फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, वो हैं ब्रॉड एंड फ्लैट लैमिना, जिसकी वजह से लीव्स ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं. थिन स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली हर सेल तक आराम से पहुंच जाती हैं. लार्ज नंबर ऑफ़ क्लोरोप्लास्ट, चूँकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है, तो जितने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसी हिसाब से फोटोसिंथेसिस भी उसका रेट भी हाई होता है. लार्ज नंबर ऑफ़ स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ईजीली एयर से लीव के अंदर डिफ्यूज़ होती है, और ऑक्सीजन आराम से आसानी से लीव को छोड़ के जा सकती है. नेटवर्क ऑफ वेन्स कंटेनिंग जाइलम एंड फ्लोएम. वेन्स के नेटवर्क के अंदर दो तरह की ट्यूब्स होती हैं, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम वाटर को लीव तक कैरी करती हैं, और फ्लोएम जो है वो प्रिपेयर्ड फूड या ग्लूकोज को बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक लेके जाती हैं. और एक वैक्सी सरफेस भी होती है लीव्स की, जिसकी वजह से जो लीव्स की सरफेस से सनलाइट में वाटर लॉस होना होता है वो रिड्यूस हो जाता है. Chemistry of photosynthesis. This is our today's topic. So let us start our today's topic, chemistry of photosynthesis. Photosynthesis is the series of chemical reaction. It's a kind of chemical reaction. असल में ये
केमिकल रिएक्शंस की एक पूरी सीरीज़ होती है जिसमें डिफरेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस कर रहे होते हैं, एंड एनर्जी फॉर दिस केमिकल रिएक्शन कम्स फ्रॉम द इन सन. इट मीन्स कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन इसीलिए हो रहा होता है कि इन रिएक्शंस के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो सनलाइट से ही मिल रही होती है. Photosynthesis and its word history. The word photosynthesis is derived from two Greek words, photo and synthesis. Photo means light and synthesis means putting together or combining. What is photosynthesis? The process in which green plants convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll. It is a chemical reaction in which carbon dioxide and water react and form glucose and oxygen, and this reaction takes place in the presence of sunlight and chlorophyll. असल में फोटोसिंथेसिस एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जिसके लिए एनर्जी सनलाइट से मिलती है, और ये रिएक्शन क्लोरोफिल के अंदर हो रहा होता है क्योंकि उस सनलाइट को क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करता है, और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करती हैं और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर्म होता है. इसका मतलब है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं. इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, दे एब्जॉर्ब सनलाइट, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंड कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू ग्लूकोज और शुगर या ग्लूकोज पे कन्वर्ट करते हैं, एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो फॉर्म्ड. Let us discuss the chemical equation for the photosynthesis. Photosynthesis की chemical equation को हम describe करते हैं. This is the chemical equation for photosynthesis. ये photosynthesis की chemical equation है. Here carbon dioxide plus water in the presence of light and chlorophyll are converted into sugar and oxygen. This equation has three parts. One, the left hand side, second one the right hand side, and the third one the arrow. The left hand side consists of raw materials. The raw materials for this reaction are carbon dioxide and water. Right hand side consists of products C6H12O6 sugar or glucose plus oxygen. Both of these are the products of this chemical reaction. And the third part is the arrow. Arrow's direction shows the direction of chemical reaction. It means carbon dioxide and water are the materials before the reaction, and sugar and oxygen are the materials obtained in a chemical reaction, while the conditions light and chlorophyll are written above and below the arrow, and these are the conditions for this chemical reaction. So this is a complete chemical equation in which you can see the reactants are the raw materials, the products, and the necessary conditions for this reaction. Once again you can see that इस केमिकल इक्वेशन में आपको तीन चीज़ें मिल जाएंगी. रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगी
और एरो जो कि रिएक्शन की डायरेक्शन को भी शो करता है, और उसके अबव एंड बिलो जो कंडीशंस लिखी गई हैं वो नेसेसरी कंडीशंस हैं फोटोसिंथेसिस की, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। सो हमारे पास एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन किस तरह की बनती है, वो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर react together in the presence of sunlight and chlorophyll to form sugar and oxygen. लोकेशन, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि असल में फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही होती है। सो लोकेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज photosynthesis takes place in the green chloroplasts present in the green parts of the plants, for example inside the leaf cells. असल में फोटोसिंथेसिस की अकरेंस के लिए जिस मटेरियल की ज़रूरत होती है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल असल में एक ग्रीन पिगमेंट है। ये जिस ऑर्गेनेली या सेल के पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मौजूद ग्रीन क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसी ग्रीन क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट का वो पार्ट ग्रीन नज़र आता है, और मेजॉरिटी प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सो असल में जो फोटोसिंथेसिस है उसकी रियल लोकेशन क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट मौजूद होता है वो है क्लोरोफिल। Conditions. There are certain conditions for photosynthesis. Carbon dioxide. Without carbon dioxide, it's not possible कि photosynthesis हो सके. Water. Water भी एक condition है, necessary condition है. Sunlight. Sunlight असल में वो energy provide करती है जिसमें ये reaction possible हो सकता है. And chlorophyll, the main location for photosynthesis. So these are the basic conditions or factors for photosynthesis. Raw materials. अगर फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है तो उसकी स्टार्टिंग के लिए कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। जो मटेरियल स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उनको रॉ मटेरियल्स कहते हैं। एंड रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनमें एक गैस है और एक लिक्विड है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस एंड वाटर इज़ अ लिक्विड। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस, इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर. It enters from the air into the leaf through stomata by a process called diffusion. Diffusion process के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लीफ के अंदर स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है। नेक्स्ट वन इज़ वाटर। वाटर भी एक रॉ मटेरियल है। वाटर इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल एंड इट इज़ एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स। प्लांट्स रूट्स इसको एब्जॉर्ब करती हैं एंड कैरी टू द लीफ बाय जाइलम ट्यूब्स, और लीफ तक इसको जाइलम ट्यूब्स कैरी आउट करती हैं या इसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। प्रोडक्ट्स असल में उन सब्सटेंसेस को, उन मटेरियल्स को बोलते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं। So the products of photosynthesis are sugar and oxygen. शुगर और ऑक्सीजन दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। शुगर इज़ द मेन फूड। चूँकि इस प्रोसेस में शुगर प्रोड्यूस होती है जिसको प्लांट्स एज अ फूड मटेरियल यूज़ करते हैं, दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस को हम फूड मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं? वो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। ग्लूकोज, ग्लूकोज इज़ अ शुगर
It is carried to other parts of the plants by phloem tubes. Some glucose is converted to starch for storage. इसका मतलब है कि शुगर जो ग्लूकोज है ये प्लांट्स के अंदर जब प्रोड्यूस हो जाती है तो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को फ्लोएम ट्यूब्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है. बट सम ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड टू स्टार्च फॉर स्टोरेज, और अगर एक्स्ट्रा हो तो उसको स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ऑक्सीजन जो कि एक गैस है, इट डिफ्यूजेस इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा. ये स्टोमेटा के थ्रू एयर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है. लेट्स हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक वीडियो की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं. Plants make their own food. Do you know how? Plants make their own food by photosynthesis. Photosynthesis is the process used by the plants to make their food. Photosynthesis is derived from two Greek words, photo and synthesis. Photo means light and synthesis means putting together or combining. Photosynthesis literally means combining water and carbon dioxide in the presence of light. The essential factors for photosynthesis are sunlight, water, and carbon dioxide. Plants also need light, water, nutrients, and soil. During photosynthesis, in the presence of light, plants absorb water from the soil and carbon dioxide from the air and convert them into glucose and oxygen. This process occurs inside the leaves in a special structure called chloroplast. Chloroplasts are present in the plant's cells. Chloroplasts contain green pigment chlorophyll. When water and carbon dioxide reach this chloroplast, they are converted into glucose and oxygen with the help of energy captured from the sunlight. The equation for the reaction is carbon dioxide plus water in the presence of light are converted into oxygen and glucose. Glucose is the carbohydrate or sugar which is produced during the photosynthesis. This is the food for plant. Let's review the topic. आज का टॉपिक रिवाइज करते हैं. इन टुडेज़ टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज़ इट्स केमिस्ट्री? Photosynthesis is the food making process in which green plants convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll. And the chemical equation for this process is carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll are converted into sugar and oxygen. The raw materials are carbon dioxide and water. Products are sugar and oxygen, and light and chlorophyll are the necessary conditions for photosynthesis. Dear students, here is an assignment for you. But you have to keep in mind that you have to complete this assignment. But submit the answer of question number 3 only by tomorrow morning in general science discussion group. You have to answer these questions. Question number 1. Name the raw materials for photosynthesis. Question number 2. Name the products of photosynthesis. Question number 3. Write down an equation for the process of photosynthesis. Question number 4. Where does photosynthesis takes place? And question number 5. Which part of the leaf helps the carbon dioxide
and oxygen to get in and out of the leaf. Well, hope so that you have understand the topic completely, but even then, if you have any problems or you face any difficulty, you can ask your problems, your questions in general science discussion group. I will be always there to answer your queries. It's all about for today. Thank you.